In this video, I will guide you how to make a clipping mask in multiple shapes. Welcome to my channel Dolphingraphic. Don't forget like, share and subscribe. First you select a rectangle, create a shape, then Alt hold copy. Again Alt hold, then copy. Full select, again Alt, then copy. Right click, select reflect. Follow this setting. Again select this rectangle and select a reflect. Follow this setting. इन सारी shapes को full select करें. Then go to direct selection tools and follow this. Done. Again full select and go to object. Make a compound path. Again go to file and select a picture. Draw this picture. Right click and arrange send a background. Then full select and make a clipping mask. Then पिक्चर में डबल क्लिक किया और शेप्स के मुताबिक इसको अरेंज किया. एंड इस पिक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यूज़ कर सकती हैं. अब बैकग्राउंड के लिए रेक्टेंगल लेंगे. ड्रा रेक्टेंगल और इसको सेंड अ बैकग्राउंड. अब आई ड्रॉप की मदद से इसका कलर चेंज करेंगे. बैकग्राउंड को लॉक कर दिया. अब इसकी आउटलाइनिंग देंगे वाइट कलर की. फॉलो दिस स्टेप. Now it's done. Any query DM and inbox. Thank you for watching. If you like this video, don't forget like, comment, share and subscribe. More tutorial visit my channel.